Stop right there. If you are in class 9 and still studying the old NCERT syllabus, then definitely you are wasting your time. Hello students, welcome to Aman Classes Jamshedpur. Today I am going to describe about the latest changes occurred in class 9 syllabus in NCERT books in very simplest way. So what has changed? NCERT ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज किए हैं, जैसे कि कुछ चैप्टर्स रिमूव हुए हैं, कुछ टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं और कुछ चैप्टर्स को और टॉपिक्स को और भी मॉडिफाई किया गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को इन तक देखें ताकि आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल सके। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स में पहले 12 चैप्टर्स होते थे, अब ये इंक्रीज होकर 15 चैप्टर्स हो चुके हैं। Now important thing is why these changes happens. तो ये चेंजेस किया गया है ताकि स्टूडेंट्स में प्रेशर कम बिल्डअप हो, स्टूडेंट जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग कर सके और इनसे उनको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी बहुत सारी हेल्प होने वाली है, इसलिए ये सब चेंजेस की गई है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आप भी ओल्ड पीडीएफ जो कि अवेलेबल है एनसीईआरटी की वेबसाइट पे उनको डाउनलोड करके उनसे पढ़ रहे हैं। तो ये एक है, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी वेट करें, एनसीईआरटी ने अब तक रिलीज नहीं किया है अपना पीडीएफ बुक्स का। जब पीडीएफ रिलीज हो जाएगा तब उनको फॉलो करें, क्योंकि अभी जो भी आप फॉलो करेंगे मे बी ये आपका वेस्ट हो सकता है। तो प्लीज लिटिल बिट वेट। So as you can see in my screen, in my left side, it is old syllabus. It is old syllabus and it is new. So previously there were 12 chapters in mathematics, but now there are 15 chapters in mathematics. So first chapter according to new syllabus is coordinate geometry, in which we have to learn about coordinate geometry. It is graph related mathematics. And second chapter, which is introduction to polynomial, it is also full chapter. Third chapter, now it is number system. Previously it was in number 1 in old book, but now in chapter number 3. And the fourth chapter is about introduction to Euclid geometry. इन चैप्टर में आपको यूक्लिड के थ्रू दिए गए एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स के बारे में स्टडी करना है। ये भी ओल्ड बुक में था, न्यू बुक में भी अवेलेबल है। एंड नेक्स्ट चैप्टर 5 which is lines and angles. In this chapter you have to learn about the lines and different types of angles and relation between lines and angles. And third, which is most important, sequence and progression, AP and GP. Sequence and progression in which there is AP and GP. तो AP which is arithmetic progression, ये स्टैंडर्ड 10 का पार्ट था। स्टैंडर्ड 10 जो कि स्टूडेंट्स ऑफ सेशन 25-26 उन्होंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है। अब नाउ स्टैंडर्ड 9 के स्टूडेंट्स को भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, साथ ही साथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विच इज नोन एज जीपी, ये भी पढ़ना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो स्टैंडर्ड 11th एंड 12th का पार्ट हुआ करता था, बट नाउ सीबीएसई ने इसे इंट्रोडक्टरी बेसिस पे स्टैंडर्ड 9 में भी दे दिया है। ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है ताकि आगे जाके उनको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी मैथमेटिक्स को समझने में। So sixth chapter which is totally new for standard 9, which is sequence and progression, AP and GP. And next chapter which was called triangle congruence theorems, in which we have to learn about the congruency of the triangles and different theorems to prove two triangles congruent. And next chapter is about mensuration, area and perimeter. Mensuration chapter, in this chapter you have to find the area and perimeter of different shapes, especially 2D shapes, two-dimensional shapes. And chapter 9 is about exploring algebraic identities. So previously in chapter polynomials, इस चैप्टर्स में पॉलिनोमियल्स एंड अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज दोनों को मिक्स करके दिया गया था, बट इस चैप्टर में क्या किया, नंबर सिस्टम को अलग कर दिया गया एक चैप्टर, और एक्सप्लोरिंग अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, तो जो भी अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती है उनको एक अदर एक सेपरेट चैप्टर बना दिया गया इस बुक में। एंड नेक्स्ट इज फोरगॉन्स, इन विच यू हैव टू लर्न अबाउट द quadrilaterals, different types of quadrilaterals and theorems related to quadrilaterals. And next chapter is circle. It is also old chapter circle. There is no changes in circle. Next chapter is about linear equation in two variables. It is also most important here because it was a part of the standard 10 previously. Linear equation two variables standard 10 में पढ़ाया जाता था, जिसमें कि दो linear equations को solve करना graphically, elimination method and substitution method, इन मेथड्स के थ्रू सॉल्यूशन फाइंड करना सिखाया जाता है। ये स्टैंडर्ड 10 का पार्ट था, नाउ अब स्टैंडर्ड 9 में ही आपको पढ़ना है। नाउ मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये मेंसुरेशन चैप्टर जिसमें कि 3D शेप्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स फाइंड करने के बारे में पढ़ना है। एंड 14th चैप्टर व्हिच इज स्टैटिस्टिक्स, statistics which is the old chapter you have to study in standard 9, and 15th which is most important because before 2021 it was a part of the standard 9, then it removed according to NEP, but now it is again
introduced in standard 9, which is introduction to probability. You have to learn about the probability. It is only introductory. It is not very deep. Further, maybe in standard 10, you have to study more about the probability. Here, you only have to learn about the introduction of the probability. So these are the topics and the chapters which is included in standard 9, and I will also give you the PDF which NCERT gives as a draft. अगर आप डाउनलोड करना चाहें उसे तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं. सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. हमारा रहेगा साइंस. साइंस में भी मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कौन से चैप्टर रिमूव हो चुके हैं, कौन से चैप्टर रिमूव नहीं हुए हैं, कौन से चैप्टर्स में क्या टॉपिक इंक्रीज हुआ है. ये सभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. आप सभी का रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और स्टे ट्यून फॉर फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियो.